That's perfect. Join kole ni? Hai kitchen ko naam to. Guys, I am audible. Ranjita Rasmi, just write in the text. I am audible or not, guys? I am audible. Yes. Good morning, good evening, good evening, and a warm welcome to Matrix DigiLearn. Today, we will study a different topic called data sufficiency. Topic name is data sufficiency. Okay, sufficiency, sufficient. माने कौन enough. Data sufficient. माने क्वेश्चन रे किसी लेखा देथिबो किसी सेंटेंस देथिबो एंड सेही सेंटेंस को देखिकी आमे आंसर करिया को पचारथिबो तो एबे क्वेश्चन एया थिबो कि जहां भी गिवन डेटा अछि सेतिकी डेटा रु आमे आंसर पाई परिबा कि is those the data given in the question is or are sufficient to give the answer जेमिति कि धरंतु गोटे स्टेटमेंट देथिबो गोटे जंतु अछि जरा चारटा गोड़ अछि ओके फर्स्ट क्वेश्चन गोटे जंतु अछि जरा चारटा गोड़ अछि सेकंड स्टेटमेंट देथिबो से जंगल रे रुहे फर्स्ट क्वेश्चन हो फर्स्ट स्टेटमेंट होछि गोटे जीव अछि जरा चारटा गोड़ अछि एंड सेकंड स्टेटमेंट होछि से जीवटी जंगल रे रुहे क्वेश्चन थिबो से जीवटी बाघ की एई दिरा स्टेटमेंट रु आमे से जीवटी कोन जानिया को चेष्टा करिवा राइट बाघर चारटा गोड़ अछि ठीक अछि एंड बाघ भी जंगल रे रुहे सी भी ठीक अछि यस और नो बट हरिण भी चारटा गोड़ अछि सी भी जंगल रे रुहे हाथी रे भी चारटा गोड़ अछि सी भी जंगल रे रुहे ताले स्टेटमेंट 1 आउ स्टेटमेंट 2 are not sufficient to give the answer बुझेला सेति पई ए टॉपिक रो ना होची डेटा सफिशिएंसी कोन डेटा सफिशिएंसी डेटा माने इंफॉर्मेशन ओके in data sufficiency question certain data is given in the form of statement and students have to decide whether the data given is sufficient to answer the question गोटे क्वेश्चन रे क्वेश्चन देथिबो डेटा गुडा को स्टेटमेंट हिसाब रे देथिबो हमको खोजिबा को हबा स्टूडेंट को खोजिबा को हबो कि जेतिकी डेटा अवेलेबल अछि द स्टेटमेंट फॉर्म रे सेतिकी सफिशिएंट की गोटे आंसर दबा को बुझला तो एई टॉपिक रे हमरा कोनोसी फार्मूला नाही कोनोसी ट्रिक नाही खाली हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करिबा स्टेटमेंट को बारंबार पढिबा अब आंसर दबा डायरेक्टली गोइंग टू द क्वेश्चन देखा जाउची टिके गाइस मते कमेंट करो क्वेश्चन विजिबल और नॉट क्वेश्चन विजिबल और नॉट माय वॉइस इज ऑडिबल और नॉट
ए दुटा क्वेश्चन मत कर दियो तापर आरंभ करिया हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग। टेक्स्ट करो बाबा, चैट करो so that I can understand the question. The screen is clear to you. My voice is audible to you. No response. Anyway, assuming voice सुबुची आउ clear देखा जाउची, मो क्वेश्चन पढुची, who among LMNOP, who among LMNOP is the shortest माने कोन, छोटो हाइट, कम उच्चता, L M N O आउ P एई मानंग भितरु, एई पांच जनंग भितरु सबुठु कम उच्चता कहार, एइढा हला क्वेश्चन। बुझेला? देखो आमे एई क्वेश्चन ने कहार उच्चता कम सेटा बाहर करबा नाही, आमे एई क्वेश्चन ने देखिबा कि आमे एई क्वेश्चन को सॉल्व करि परिबा कि नाही, प्रोवाइडेड दिस टू स्टेटमेंट। एई दिटा स्टेटमेंट दिया हिची, याको देखि कि आमे एई स्टेटमेंट रो आंसर बाहर करि परिबा कि नाही, सेटा हला क्वेश्चन। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट कौन लिखिला? O is shorter than P, O टा P ठारो सानो, त यदि मो एइठा O को रखुची, एइठा P को रखुची, P टा बडो है ऊपर रखिली। ओके, O is shorter than P, तले एइठा मो P को रखुची, एठे O को रखिली, त माने होजी O is shorter than P, but taller than N, किए O is taller than N ठारो बडो। फर्स्ट स्टेटमेंट सरी गला। सेकंड कोन होजी, M is not as tall as L, M L जति की ऊंचा सेति की ऊंचा नुह, M L जति की ऊंचा सेति की ऊंचा नुह, L आउ M यांकर हाइट समान नुह, सेति की ऊंचा नुह, तो M L ठारो छोटो। देखो PON यांकर भितरे हाइट जणा पड़ी जाउची, LM यांको भितरे भी हाइट जणा पड़ी जाउची, यस और नो, किंतु ए LM आउ NOP यांको भितरे कोनोसी रिलेशन अछि कि नाही। आमे कहि परिबा P टा O ठु बडो, P टा N ठु बडो, आमे कहि परिबा कि P टा L ठारु बडो ना सानो, कहि परिबा कि कहि परिबा नाही। ता माने ना तो स्टेटमेंट 1 रे आमे कहि परिबा, ना तो स्टेटमेंट 2 को लेके हम सॉल्व करि परिबा, ना दुइटा जाक मिसै कि भी सॉल्व करि परिबा नाही। सो इट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड द आंसर फ्रॉम दिस टू स्टेटमेंट। तो आंसर कोन आसी, क्वेश्चन टी पढि दे आंसर। इफ द डेटा इन स्टेटमेंट 1 अलोन सफिशिएंट, स्टेटमेंट 1 रे जहा अछि केवल सेति की सफिशिएंट के आंसर दवा पई, नो, इम्पॉसिबल। While the data in statement 2 alone is not sufficient, तमाने ऑप्शन एमिति थिबो कि स्टेटमेंट 1 दा सफिशिएंट, केवल स्टेटमेंट 1 रे आंसर मिल जाउची, किंतु केवल स्टेटमेंट 2 रे आंसर मिलु नाही। सेकंड बिट लिखिची केवल स्टेटमेंट 2 रे आंसर मिलुची, किंतु केवल स्टेटमेंट को 1 फोकस कले हमको आंसर मिलिबो नाही। थर्ड, बोथ, if the data either in statement 1 or in statement 2 alone, कोनोसी गोटिए स्टेटमेंट को नेकी हम सॉल्व करि परिबा, इम्पॉसिबल। if the data even in both statement, दुइटा को मिसै कि भी करि परिबा कि ना, if the data in both the statement together are not sufficient to answer the question, तो हमर आंसर हबो ई ऑप्शन। आमे स्टेटमेंट 1 आउ स्टेटमेंट 2 दीटा जाको मिसैला परे भी हमको आंसर मिलु नाही, तला हमें कहबा both the statement 1 and statement 2 are not sufficient to answer our question. Clear? Okay, आमे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। क्वेश्चन पढ़ो। इफ ए पर्सन कोन लिखला, हां, पॉइंट ए इज टुवर्ड्स व्हिच, माने दुईटा पॉइंट अछि बाबा,
टिके ध्यान दियो टिके ज्योमेट्री एठे यूज हबो दुईटा पॉइंट अछि गोटे पॉइंट होची ए पॉइंट आ गोटे पॉइंट होची बी पॉइंट से कहूची पॉइंट ए इज टुवर्ड्स व्हिच डायरेक्शन फ्रॉम बी बी रा को दिगरे ए पॉइंट अछि आमे जानि छे भलो की जानि छे कोनोसी बोर्ड रो बा खातार डाहाण पटे होची ईस्ट ऊपरे होची नॉर्थ बा पटे होची वेस्ट आ डाउन तळे होची साउथ डायरेक्शन सेंस टेस्ट रे हम पढ़ी थिले कोनोसी भी बुक क्वेश्चन पेपर बोर्ड जहां भी हो तार टॉप टा होची नॉर्थ बॉटम टा साउथ राइट टा ईस्ट लेफ्ट टा वेस्ट पूर्व पश्चिम उत्तर एंड दक्षिण एति की बुझे गला ओके एबे क्वेश्चन कहूची स्टेटमेंट 1 पढ़िबा स्टेटमेंट 1 पढ़िबा ध्यान दे की पढ़ो स्टेटमेंट 1 को if a person walks 4 kilometer towards north from point A माने जोठू आरंभ करला सही पॉइंट होची पॉइंट ए रु से 4 किलोमीटर गला कुआडे नॉर्थ को माने ऊपर को एठी की 4 किलोमीटर गला 4 किलोमीटर बर्तमान एठे पहुंची गला राइट and takes two consecutive right turn बाबा रे राइट टर्न माने डाहाण को बुझी बुलिबा consecutive माने गोटे परे आ गोटे सडनली टू consecutive right turn माने थरे डाहाण को बुलिली पुडी आउ डाहाण को बुलिली बुझिला टू consecutive right turn गोटे परे आ गोटे two consecutive right turn each after walking 4 meter एटा किलोमीटर न बाबा this is 4 meter सो एठे पहुंच गिरी राइट टर्न नेला 4 मीटर पुनी आ गोटे राइट टर्न नेला एठे केते 4 मीटर देखो यार राइट ये एति बुझेला कि नहीं से वर्तमान एठे पहुंच जाईची सेम डिस्टेंस अछि ए जो पहुंचला परे he would reach at point C ए जो पॉइंट अछि ए पॉइंट रो ना होची पॉइंट C गोटे लोक ए पॉइंट रो नॉर्थ को 4 किलोमीटर गला तापरे दुईटा कंजुगेटिव टर्न नेला राइट साइड को 4 किलोमीटर व्यवधान रे प्रथमे 4 किलोमीटर नेला ओके तापरे पुनी 4 किलोमीटर नेला टू कंजुगेटिव राइट टर्न जोटे पहुंचला सेटा होची पॉइंट सी डन ओके पॉइंट सी व्हिच इज 4 मीटर अवे फ्रॉम पॉइंट बी ए पॉइंट सी टा पॉइंट बी ठारू 4 मीटर दूर 4 मीटर दूर माने पॉइंट बी टा एठे भी हेई परिबो जोठे भी पॉइंट बी रहू पॉइंट बी टा सी ठारू 4 मीटर दूर रे अछि एई लाइन टाको हम अंडरलाइन कर रखिथिबा कारण पी बी पॉइंट रो लोकेशन एबे हमें जानि पारि नहंती ओके नेक्स्ट बढ़िला कोन लिखाई छी सेकंड स्टेटमेंट पॉइंट डी एटा आउ गोटे पॉइंट अछि पॉइंट डी is 2 meters towards the east of the point A point ro east पटकू डाहाण पटकू एइठे कोडे गोटे पॉइंट डी अछि जे कि 2 मीटर राइट तापरे कहिछि and 4 meter towards the west of point B रो west को point D is 2 meter towards the east of point A okay and 4 meter towards the point B तले point B टा कोडे हो एटा हो कारण एटा होची 2 मीटर एठो जाके 2 मीटर टोटल 4 मीटर अब B रो वेस्ट को अछि त माने एई पॉइंट हला पॉइंट B ए मते कुहो एबे A पॉइंट आउ B पॉइंट डायरेक्शन जणा पड़ी जाउची कि नाही वेरी क्लियरली जानि पारुचे कि बी पॉइंट ए पॉइंट रो ईस्ट अछि किबा ए पॉइंट बी पॉइंट रो वेस्ट अछि राइट ताले हमको ए टोटल जिंस स्टडी करिया को हेले हां तापर आवडे कोन लिखिची हुई सी टा 8 मीटर अवे फ्रॉम बी सी टा बी ठारो 8 मीटर दूरतार अछि 8 मीटर पॉसिबल हैला कि एठे हमें 2 to 4 बार अच्छा 8
पॉसिबल हैला कि पॉसिबल हैला कि पॉसिबल हैला नाही बोधे टेस्ट इट गाइस जदि आम टे ध्यान देवा आमको ये आंसर भूल मिलला आम कर नहीं तो एबे टिके भल कि ध्यान देखा तामाने जदि आम स्टेटमेंट 1 रो केवल ए रेड लाइन टाकू हटई दउचे ताहले आंसर किछि मिलुची सिमिलरली पॉइंट 2 रे भी आंसर मिल जाउची किंतु पॉइंट 1 रो रेड लाइन को इंक्लूड कर दवा जदि हमको आंसर भूल पड़े आसुची ताहले पॉइंट 1 बा स्टेटमेंट 1 is not sufficient statement 1 is not sufficient to give the answer चेक करो केवल स्टेटमेंट 2 रे हे पारुछि कि भलो कि देखो स्टेटमेंट 2 रे हे पारुछि कि कोन कहला पॉइंट डी इज 2 मीटर टुवर्ड्स द ईस्ट ऑफ पॉइंट ए धरिनिया पॉइंट ए टा होउछि एठी पॉइंट ए टा होउछि एठी आ गोटे डी अच्छी जे कि 2 मीटर फ्रॉम द ईस्ट ऑफ पॉइंट ए ताले 2 मीटर गले ईस्ट को हमें पाइबा पॉइंट डी एक्सक्यूज मी ओके एंड 4 मीटर टुवर्ड्स द वेस्ट ऑफ पॉइंट बी ए डी पॉइंट 4 मीटर टू द वेस्ट ऑफ बी 4 मीटर तो ये क्लियरली आंसर सॉल्व हो जाउछ तो ओनली स्टेटमेंट 2 guys only statement 2 is sufficient to answer the question सेति पई option B have the right answer if the statement in statement 2 alone is sufficient to answer the question while the data in statement 1 alone is not sufficient statement 1 ने जहां डेटा अछि this is not sufficient to answer the question but statement 2 रे जहां डेटा अछि it's very much sufficient to answer the question guys बुझे होछि कि नहीं कमेंट रे रिप्लाई दियो प्लीज so that I can understand whether you are understanding or not कमेंट रे टिके जय श्री राम लिखी छाड़ दियो अरे नो सार जो दिए ताले एबे पर्यंत काहे के वेट करिजो ओके गाइस मु सही सेम टा को आउथरे काई करबी आ गोटे प्रॉब्लम करूची इजिया बुझिया पई हां वी हैव सो मेनी प्रॉब्लम चेष्टा कर बुझिया पई हला ओके क्वेश्चन दे पढ़ो तो रीड द क्वेश्चन हाउ मेनी ब्रदर डज भरत हैव भरतर केते जण भाई अछंती क्वेश्चन पचारुछ आमे सही क्वेश्चन आंसर एई दुईटा स्टेटमेंट रु बाहर करिबा बुझेला ओके स्टार्ट करिबा प्रथम स्टेटमेंट कोन कहिला स्टेटमेंट 1 कहिला शिला द मदर ऑफ भरत शिला होउची भरतर मां बा भारतर मां भरतर मां होउची शिला बुझ पारलो शिला को मु कर देली स्क्वायर भरत पुओ को कली राउंड झियो को कली स्क्वायर आ ऊपर हैला मां तळे हैला छुआ साइड हैला भाई भौणी ओके शिला द मदर ऑफ मदर हैज ओनली 3 चिल्ड्रेन तले शिला रो 3 जण छुआ अछंती गोटे दीटा तीनटा बुझ पर स्टेटमेंट कोन 1 कोन कहला शिला रो 3टा पिला अछंती बुझेला किंतु स्टेटमेंट 1 रे गोटिए जिंस अछि भरता ना आउ जो दीटा पिला अछंती ताको ना देछि कि ना तो ना देछि ना से माने मेल किमा फीमेल देछि ताहले हमें कहि परिबानी कि भरतर भाई केते जण
बुझेला तो माने स्टेटमेंट 1 alone not sufficient to give the answer of this question how many brother does Bharat have एबे बुझियोथबो क्लियर ओके एबे स्टेटमेंट 2 देखिबा स्टेटमेंट 2 रे कोन अछि देखो मीना द ग्रैंडमदर ऑफ भरत एडा हला भरत भरत ऊपर ता बापा मा अछंती ता ऊपर गोटे झियो अछि जे कि मीना एडा ता ग्रैंड मदर मु लेडीज को स्क्वायर करूची जेंट्स को राउंड करूची तो भरत को राउंड कर देली ये हो ग्रैंड मदर ओके भरत हैज ओनली वन ग्रैंड डॉटर देखो ध्यान दियो मीनार मीनार केवल गोटिए ग्रैंड डॉटर अछि माने मीनार गोटिए नातुणी अछि एइडा होती मीनार पुओ बहु एइडा हला मीनार नाति नातुणी आमे जानि छे एडे तीन जण भाई भौणी थिले तेनु जणे होउची नातुणी आउ दी जण हेले नाती क्वेश्चन ने कहिची मीनार गोटिए नातुणी बट जदि गोटिए नातुणी हेला मीनार टोटाल तीन जण नाती नातुणी सेतरु केवल जणे हेले नातुणी ताले बाकी दी जण नाती हेबे तो सेही हिसाब रे आमे कहि परिबा कि भरत रो गोटिए भाई अछि यस और नो भरत रो गोटिए भाई आउ गोटिए भौणी क्लियर हे गला तिक रे क्लियर हे गला ओके एबे ऑप्शन देखिबा आमे देखितिले ऑप्शन 1 इज नॉट सफिशिएंट ऑप्शन 1 इज नॉट सफिशिएंट ओके ऑप्शन 1 इज नॉट सफिशिएंट एतो किछ इन्फॉर्मेशन मिलुची ओके बट सफिशिएंट नो ऑप्शन 2 रे देखो ऑप्शन 2 रे हमको मिलला गोटे भाई अछि ओके बट ए तीनटा बुलिया केमिति जानले एठू जानले ना ऑप्शन 1 नु जानले ना एठू जानि परले कि जदि हम ऑप्शन 2 को नबा ऑप्शन 2 भी नॉट सफिशिएंट काहे कि ना से कहउची केवल गोटिए नातुणी अछि टोटल नाती नातुणी कथा किछि कहि पारुछि कि टोटल नंबर ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रेन हमें ऑप्शन ए रु पाइले बा स्टेटमेंट ए रु पाइले तेणु ना तो स्टेटमेंट ए ना तो स्टेटमेंट 1 अलोन सफिशिएंट ना तो स्टेटमेंट 2 अलोन सफिशिएंट बुझि पारलो मो कथा आबे केवल स्टेटमेंट ए को नै कि आंसर बाहर कर परिबानी कि स्टेटमेंट 2 को नै कि आंसर बाहर कर परिबानी हमको आंसर बाहर करिया को हेले बोथ स्टेटमेंट दरकार ए आउ बी बुझेला ए आउ बी बोथ दरकार तो ऑप्शन आंसर कोन हबो ऑप्शन डी कोन इफ द डेटा even given नहीं given in both the statement together option D no sorry option E हबो आंसर एटी छाडी दे जिमु if the data given in the both the statements together are sufficient माने हमको आंसर बाहर करबा को हेले दुईटा जाक स्टेटमेंट जानिबा बाध्यता मूलक एबे भाबु जे टिके टिके बुझेउथिबो कमेंट करो प्लीज टिके टिके बुझेला कि नहीं गाइस ओके इन दैट केस गोटिए क्वेश्चन ट्राई करो ए क्वेश्चन टा ट्राई दिस क्वेश्चन आई एम गिविंग यू टाइम 2 मिनट अरे यार को वाला ए क्वेश्चन टा थिला ओके ट्राई करो
रंजिता गोटे क्वेश्चन को आउ थरे कले टाइम केमती हबो रे चेष्टा कर बुझिया मु तो आउ गोटे क्वेश्चन दउची धीरे धीरे डूइंग मल्टीपल ऑफ क्वेश्चन मेक योर डाउट क्लियर सिंगल क्वेश्चन रिपीट करले हमें सेठी रहि जिबा ओके तुम याकू ट्राई करो ओके आंसर कार बाहर लगी anyone has tried to get the answer no one okay let me solve for you से कहूची क्वेश्चन कहूची is t the grandmother of q is t the grandmother of q माने t q रो जेजेमा की बुझला t is the grandmother of q तो माने q जदी एठी रहिबो एटा हला किए जानिनी ता बापा मा दिस इज t एटा होची फ्लो t रो पिला माने होचंदी ये यांका पिला माने होची q और t रो ग्रांड मदर होची q हमको एटा बाहर करिया पड़िबो इज दिस सैटिस्फाइड और नॉट बुझेला अरे हां कि नहीं t तळे q उड अछि जानिनी ता तळे q अछि एई फ्लो हमको दरकार राइट अरे यार कोन हेते एई फ्लो ओके we'll try from the statement 1 statement 1 कहूची कि p is the mother of q p is the mother of q ताले q यदि एठी रहिला q रो मदर होची p मदर माने फीमेल ताको मु आउट कर देली q टा कोन मेल फीमेल मु जानिनी इग्नोर इट ताले p जानली मु q रो मदर q is the son of r बुझला q is the son of r बाबा रे एटा मुझे r लिखि देबी आ एटा को सर्कल कर माने रेक्टेंगल कर देबी ये होची मेल ये होची फीमेल किमा मु एमिति बतौची तुमको आउ थरे मु q को एठी लिखिली से कहला p is the mother of q एटा ला p प्लस सिंबल दे देली एटा होची फीमेल r एठे मु आरो सिंबल दे देली एटा होची मेल त माने p आउ r होचंदी हस्बैंड वाइफ तांकर छुआ होची q बुझि पारलो त माने p रो बेबी होची q r रो बेबी होची q किंतु एठी कोन लिखि छि q इज द सन ऑफ r त माने q टा भी उडा सन पुओटा बुझेला q इज द सन ऑफ r एते के मिल जाई एंड r इज द सन ऑफ t ए जो r ना ये t रो सन t जे भी हो त माने थर्ड तीनटा फ्लो मिली गला t रो पुओ r रो पुओ q ताले t टा होची q रो जेजेमा एते की बुझे गला त स्टेटमेंट 1 टा सफिशिएंट हे गला हमको आंसर पायत पाई बुझेला स्टेटमेंट 1 इज सफिशिएंट टू फाइंड द आंसर ओके चेक करा स्टेटमेंट 2 टा हे करू कि नै 1 तो सफिशिएंट हे गला ठीक अछि 2 देखिबा l इज द फादर ऑफ n l is the father of n ताले l टा होची मेल and n is the daughter of t and n is the daughter of t t रो छुआ होची n जियो ताले ये होची प्लस ये फीमेल ये जो पेरेंट्स ओके एठी q रो क्वेश्चन ही उठु नाही स्टेटमेंट 2 रे q रो क्वेश्चन ही उठु नाही तेनु स्टेटमेंट 2 थिबा जहा नथिबा सया हमको स्टेटमेंट 1 रु डायरेक्ट आंसर मिल जाउची तो ऑप्शन 1 of answer if the data in the statement 1 alone is sufficient to answer the question while the data in statement 2 alone is not sufficient to answer the question are you getting my point एबे बुझी पारलो कि नाही टे को yes or no
चक्कर वाई योर ऑप्शन इज ऑप्शन सी बेटा ऑप्शन सी केमिति हैला ऑप्शन सी रे क्वेश्चन कहिछि कोन आइदर स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 2 रे तो क्यू रो क्वेश्चन ही नाही तले मु केमिति जानिबी कि स्टेटमेंट 2 डरे हमको आंसर मिलबो बेटा दिस इज नॉट पॉसिबल स्टेटमेंट 2 रे मिलबो ही नाही बुझेला रंजिता ट्राई टू अंडरस्टैंड बुझे होचे कि नहीं आ गोटे क्वेश्चन एटा को तमे ट्राई करो प्लीज सब मो द्वारा करवा ठीक नुह आई एम गिविंग 1 मिनट टाइम ट्राई दिस टाइम अप गाइस के सॉल्व करि पारलो कि एटलीस्ट क्वेश्चन तो बुझी पारिथिबो ना कार आंसर बाहरला गाइस आ टिके वेट करू छी ट्राई कर आंसर करिया पे ओके मो सॉल्व कर दउछ कारण एटा ही लास्ट ऑप्शन क्वेश्चन कहूची 5 जण फ्रेंड अछंती लीना अमित अरुण अली केन 5 जण फ्रेंड अछंती जो माने कि गोटे राउंड टेबल साइड रे बसचंती एटा गोटे राउंड डाइनिंग टेबल हो ता साइड रे बसचंती एबे क्वेश्चन अछि कि समस्ते सेंटर को फेस करिसंती कि माने समस्ते सेंटर को अनै छंती कि एटा क्वेश्चन आम क्वेश्चन ने आमे बाहर करिया को पड़िबो कि सब 5 जण संग सेंटर को फेस करिसंती कि बुझि पारलो तो आमे स्टेटमेंट 1 चेक करिवा कोन लिखा हिची लीना सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ अमित धरिनियो अमित एठे बसिला ता लेफ्ट इयाडे हबो एठे हला लीना बुझेला अमित अमित फेस टू द सेंटर अमित सेंटर को अनेछि अमित सेंटर को अनेछि किंतु लीना विषय किछि कुहा हला नाही लीना सेंटर को अनेछि कि लीना सेंटर को अनै नाही से विषय किछि कुहा हला नाही ए जाके तापर लिखा हला अरुण सीट सेकंड टू द राइट ऑफ लीना दैट इज इम्पॉसिबल अमित रो सेकंड लेफ्ट रे लीना अछि ताले लीना रो सेकंड राइट रे अमित हवा कथा अरुण केमिति हबो एक तो पॉसिबल नुह ताले स्टेटमेंट 1 रो हमको किछि आंसर मिलुनी इग्नोर इट भूली जाओ स्टेटमेंट 2 को देखिबा ओनली सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ केन धरिनो केन को एठी बसैली ता लेफ्ट रे फर्स्ट सेकंड थर्ड एटा होची किए ओनली केन फेस टू द सेंटर केन सेंटर को अनैछि
बट ओनली से किसी कुहा हेनी अमित सीट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ओली ओली द इमीडिएट लेफ्ट किए अमित एटा हଉଛି अमित ओली जदि भाबिन याडा अनेइछि ओली भाबिन लेट्स से याडा अनेइछि ता लेफ्ट हला एठी से बाहर को अनेइथिबो ता लेफ्ट हला एठी तले अमित रो पोजीशन बहुत जगह रे होछि काहे कि हमर ओली रो फेस देइनी बट केन इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ अमित इग्नोर भाई क्वेश्चन दीटा जाकरू हमको को जगह रे मिली पारुनी कि समस्ते सेंटर को अनै छंती कि नाही तेनो ऑप्शन डी हबो data given in the both the statement together are not sufficient to answer the question jar answer d asuchi congratulations okay let us try to solve the next problem solve it जकर तबे क्वेश्चन टा कंप्लीटली पढुनो कि बाबा क्वेश्चन कौन डिमांड करूची सुन काका आमे जेते भी टैलेंटेड हे जाऊ आमे जेते भी आंसर हमको मिलो दैट इज नॉट सफिशिएंट सफिशिएंट कौन क्वेश्चन हमको कौन आंसर पचारुची बुझेला हमको क्वेश्चन जहां भी मिल जाऊ इग्नोर इट क्वेश्चन कौन मागु सेटा इंपोर्टेंट राइट तेनो क्वेश्चन सॉल्व करो देखो कौन लिखा है क्वेश्चन को बारंबार रीड करो okay let me solve again because you are not trying probably question कहला in which day of the month is definitely Mina's birthday मासर को दिन मीनार बर्थडे पडुची एटा होची क्वेश्चन ओके आमे मासरे 30 दिन अछि किबा 31 दिन किबा 28 दिन अछि किबा 12 देखिबा 7टा 12 अछि आमे चेक करिया को दिन पडुची स्टेटमेंट 1 देखो मीना's brother correctly remember that मीना बर्थडे इज आफ्टर 25 बट बिफोर 29 मीनार भाई मन रखिछि कोन मन रखिछि मीनार बर्थडे 25 परे आउ 29 आगरु पडुछि माने आइदर 26 हेतिबो नहले 27 हेतिबो नहले 28 हेतिबो बुझि पारछो एई तीनटा डेर किछि दिबो कारण 25 परे किए 26 27 28 29 पूर्व किए 28 27 26 माने हम 25 और 29 को इनक्लूड करिबा नाही ताले एतिकिरु आमे जानले आइदर एठे पडुथबो नले एठे पडुथबो नले एठे माने आंसर मिलला की मिलला नाही ताले स्टेटमेंट ए इज नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन एबे स्टेटमेंट बी पढिबा बी कोन लिखिला मीना's father correctly remember that Mina birthday is after 27 but before 21st before 31st मीना बापा कहले मीना बापा मन अच्छी कि तांको झीर बर्थडे टा 27 पर पडुछि
किंतु 31 आगरू पड़ू किए किए रहा 28 29 30 ताल देख यही तीन टा भितर कॉमन किए है 28 बुझिपार ताने दीटा जाक स्टेटमेंट को जे आमे परफेक्टली स्टडी करिबा ताले हमको आंसर मिलू कि मीनार बर्थडे 28 रे पड़ुछि सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर नीडेड टू फाइंड द आंसर क्लियर बुझिपारलो नेक्स्ट देखो हाउ मेनी सिस्टर्स डज मधु हैव मधुर मधुर केते जण भौणी अछंती सिस्टर द नंबर ऑफ सिस्टर्स ऑफ मधु ताले हमें स्टेटमेंट 1 देखिबा मधु पेरेंट्स हैव 4 चिल्ड्रेन मधुर पेरेंट कर चारिटा छुआ अछंती गोटे हैला मधु आउ तीनटा के मु जानिनी ताले स्टेटमेंट 1 रे हमको आंसर मिलू नाही आमे केवल जानि पारुचे कि मधुर 3 जण भाई भौणी अछंती बट केते जण भौणी के जण भाई हम जानि पारु नाही सेकंड लिखिबा मधु हैज 3 ब्रदर मधुर 3टा भाई एटा गोटे ब्रदर एटा गोटे ब्रदर एटा गोटे ब्रदर मधुर 3टा भाई माने हम एतरो कंफर्म हे गले स्टेटमेंट 1 रु कि मधुर 3 जण भाई भौणी अछंती एंड स्टेटमेंट 2 रु कंफर्म हेले मधुर 3 जण खाली भाई अछंती ताले हम कंक्लूड करि परिबा कि मधुर कौनसी भौणी नहांती क्लियर ता माने हम कहि परिबा बोथ द स्टेटमेंट स्टेटमेंट 1 and statement 2 both are sufficient both are required to find the answer clear question number 9 is R the granddaughter of C ए भला क्वेश्चन उडा करिथिले कि C रो ग्रैंडडॉटर आर की C रो ग्रैंडडॉटर आर की C रो पिला माने कि ओडा अछंती तांकर पिला होची आर ग्रैंडडॉटर एटा माने एटा ओडा झियोटी प्लस चिन्ह देबी द स्टेटमेंट 1 को देखिबा स्टेटमेंट 1 कोन कहला बेटा द ओनली सिस्टर ऑफ A is the mother of R's brother ओनली सिस्टर ऑफ ए रो गोटिए सिस्टर अच्छी जीए की मदर ऑफ आर्स ब्रदर आर रो गोटिए भाई अच्छी से भाई रो मां होची ए रो सिस्टर तेनु एठी सी आउ आर विषय किछि डेटा मिलिला नाही ताले स्टेटमेंट ए रु हमें पाई पारु नहंती कि आर टा सी रो नातुणी कि नुह स्टेटमेंट 2 देखिबा स्टेटमेंट 2 कहूची सी द मदर ऑफ ए हैज ओनली वन ग्रैंडसन सी होची ए रो मदर सी होची ए रो मदर सी को एठ रखि देबा सी होची ए रो मदर जारो केवल it has only one grandson एई जगह रे देखिबा जदी तांकर भाई भौणी जहा भी दुई जण होचंदी के लिखला कण ओनली वन ग्रैंडसन जे की बी बुझेला शी हैज ओनली वन ग्रैंडसन बी ताले बी टा हला सन आटा होची बी टा होची ग्रैंडसन आटा होची ग्रैंडडॉटर देखो सी तळे ये रहिले याको तळे आर रहिला ऑब्वियसली आर टा डॉटर हे जोची तेनो सी रो ठीक अछि तेनो ऑप्शन ए स्टेटमेंट ए एंड स्टेटमेंट बी बोथ रिक्वायर्ड टू फाइंड द आंसर ऑफ क्वेश्चन 9 क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सॉल्व करो ट्राई टू सॉल्व दिस
ओके मत ही करिया पड़ो आ किसी उपाय नहीं four friends ABCD are seated in circle facing center but not necessarily in the same order. Is anyone seated exactly between C and D when counted from the left of C? से कहते ABCD चार जन अच्छा ABCD चार जन अच्छा समस्ते सेंटर को अनेइछंती आ जदि आमे देखिबा सी आउ डी मझिरे के गोटे बसिछि कि माने हेइथिबो बी टा एइटे थिबो हला से पचारछि मेन कथा चारि जन पिला सेंटर को अनेकी बसचंती क्वेश्चन होउछि सी आउ डी मझिरे केही बसचंती कि ओके स्टेटमेंट 1 देखो बी इज सीटेड टू द इमीडिएट राइट ऑफ सी जदि मुझे सी को रखुची सी सेंटर को नहीं तार इमीडिएटली राइट क्वाड हेबो एटा एटा होची बी बी सीटेड टू द इमीडिएट राइट ऑफ सी तेणु एटे डी रो क्वेश्चन नाही तेणु ऑप्शन बा स्टेटमेंट 1 रो किछ आंसर मिलु नाही स्टेटमेंट 2 देखिबा बी सीटेड टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए बी सीटेड टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए राइट ठीक अछि D is not an immediate neighbor of B. D is not an immediate माने B ର ପାଖାପାଖି ନେବର D ନୁହ ତେଣୁ C ଆଉ D ମଝିରେ କୌଣସି ଲୋକ ବସିଲେ ନାହିଁ Is anyone seated exactly between C and D when counted from the left of C? C ର लेफ्ट को देखिबा C ଆଉ D ଭିତରେ କେହି ବସିଲେ କି बसिले नहीं तो आम जानी पारुचे कहीं बसिले बोली आंसर मिल पारुची केमिति मिलला जो दीटा स्टेटमेंट को हम कंसीडर कले ताहले आम जानी पारले कि आंसर मिलुची कि केही बसि नांती सो ऑप्शन ई हबो बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन ऑप्शन डी रे लिखा है नॉट सफिशिएंट एंड ऑप्शन डी थिला कटि जाय तो ओके एटा गोटे क्वेश्चन करो चक्कर बुझी होची छटा बिल्डिंग अच्छी जेके एलएम एनओ छटा बिल्डिंग अच्छी जेके एलएमएनओ से पचारुची को बिल्डिंग टा सबुठू उच्चा टॉलेस्ट किए स्टेटमेंट 1 को चेक करो एम इज टॉलर देन जे एडा हला एम एडा हला जे टू बड़ होची एम एंड ओ but shorter than k n is taller than m n is taller than m but not tallest n tallest नुह कि k भी tallest नुह k is not tallest तमाने इधर जोना पड़ला नहीं एक तो पांचटा 1 2 3 4 पांचटा देइची आ सेतरो ये भी टॉलेस्ट नुह कि ये भी टॉलेस्ट नुह तेणु ऑप्शन बा स्टेटमेंट ए रो हमको आंसर मिलला नहीं स्टेटमेंट बी को जिबा बी रे कोन लिखाई छी k is shorter than only two building k is shorter than
ओनली टू बिल्डिंग तारे या को लिखे दियो ऑप्शन स्टेटमेंट ए द आंसर मिलला नहीं कहीं लिखे ताको स्टेटमेंट 2 देखिबा के इज शॉर्टर देन ओनली टू बिल्डिंग के डाउट बिल्डिंग अछि के सीए दुईटा बिल्डिंग अछंती माने के टू बड़ आ दुटा बिल्डिंग अछंती शॉर्टर देन के जे इज शॉर्टर देन एम J is shorter than M and K but taller than O. आउ थोड़ा देखिबा एमिते भी इम्पॉसिबल है जीवो कारण आमे देखिले स्टेटमेंट 1 रे पांचटा बिल्डिंग थिला पांचटा बिल्डिंग आमे K को एट लिखिथिले एटा होची K दा हाइट थिला एटा पुणी कहूची K is shorter than only two building जदि हमें आउ दिटा बिल्डिंग को ऐड कर दबा टोटल बिल्डिंग 1 2 3 4 5 6 7 सातटा हो जाउची किंतु क्वेश्चन रे गिवन अछि ओनली पांचटा बिल्डिंग इसे छटा बिल्डिंग तेनो पॉसिबल नो स्टेटमेंट 1 आउ स्टेटमेंट 2 बोथ आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एटिके कष्ट हो जाउची तो इजी क्वेश्चन देखुची एनीवे आमे क्वेश्चन को एतिके रखि देबा नहले वी हैव सो मेनी क्वेश्चंस मोर तो मन पड़ुनी म तुम शेयर करिया पई टुडे आई विल डेफिनेटली ट्राई टू शेयर द क्वेश्चन स्क्रीनशॉट टू यू एमिते तुम बुक्स रे भी अवेलेबल अछि राइट तो मटेरियल बुक्स रे अवेलेबल अछि ट्राई कर सॉल्व करिया पई ओके so we'll wind up the class today thank you very much for attending the class goodbye good evening